Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Anchal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, in our previous session, we were doing exercise 15.1. Okay, so we have already done to sum number 10, and of 11 sum we have done up to question part A. Okay, and today I'm going to start with the B part of question number 11 of exercise 15.1. Okay, so all of you just open your books at page number 177, that is exercise 15.1, and along with that kindly open your notebooks as well. So the exercise is 15.1 and the topic is patron. Patern. That is patron. The topic is patron. Okay, so this is the topic here, patron. Chaliye, now starting with the B part of question number 11 is, okay, so the question was, study the pattern and fill in the missing terms. One is done for you. So as you can see here, there are certain figures given. So this one we have already done yesterday, and today we are going to start with these two. Okay, so in these two figures you can see, so certain, while following a certain pattern they have solved the sum, and while observing this pattern we are going to solve that what will become in the jahan pe blanks as what will we fill here. So for that we have to observe the pattern first, that what we are going to fill in that. Okay, so I'll just, first of all, I'll just write a diagram here. So this is the question number 11, B part. So the figure is like this. First of all, here is a circle. Then, okay, so I'll just draw it a little bit bigger. Okay, so it's a circle like this. So here it is drawn like this. Next, so next this. So this kind of figure, yeah, you can see in your book. So this is a kind of figure that you can see in your book, and certain numbers are written in it as well. उसमें बहुत सारे numbers हैं, वो भी लिखे हुए हैं. Okay, so starting with the this. Okay, so I'm just writing to whatever, so जो already इसमें mentioned है वो मैं सबसे पहले लिखूंगी. Here it is 10, then it's 17, then it's 7. Okay, and here it is 19. Okay, then it is 27. Here it is 12. It is 50 and 9 and 25. So as I can see in the book, so these are the various numbers that are given. Okay, तो देखिए, so first thing that you have to find out that what kind of pattern. तो देखिए हर एक except this, in each flower कह सकते हो, leaf कह सकते हो, whatever you want to say. So except this, in 3 of these you can find an empty space is there. Except this one, you can find an empty space in these 3. Okay, so what will come in this empty spaces or the blanks that is given in these 3 flower petals or the leaves, जो भी आपको लगता है, तो इसको observe करते हुए you have to find the answers of these as well. Clear? So देखिए, the pattern, in the pattern topic, first of all the most important thing is that you have to observe the pattern. That first of all you have to observe करिए कि pattern आखिर है क्या, दिया क्या है. This is very important. Okay, so as I am observing it, so this is the complete, and here one there is a one blank, here also there is a one blank, and here also there is a one blank. So let's study, first of all observe this pattern. तो इस pattern को observe करते हुए हम देखते हैं. So 17, 7 and 10. तो मैंने कल जो आपको एक एग्जाम्पल करवाई थी related to this only.
So in that you must have observed that here it is 17 and here it is 7 and here it is 10. So that means the 10 is somehow related to the both. तो हम इन दोनों के साथ कुछ ऐसी कैलकुलेशंस करेंगे so that we can get the 10. Okay, so if you observe that if we plus 17 and 7, what will be the answer? 17 plus 7 will be 24. Well, here we are having 10. Next, let's do subtraction. 17 minus 7, that is 10. हो गया? 17 minus 7 is 10. थर्ड एक बार और ट्राई करके देखते हैं कि मे बी हम सब्ट्रैक्शन का सोच रहे हैं, इसके अलावा कोई और पैटर्न भी हो सकता है. ओके, 17 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट विल डेफिनेटली बी 10. 17 डिवाइडेड बाय 7, इट इज नॉट पॉसिबल, तो वो भी 10 है. सो देखिए इस पैटर्न को, व्हाइल ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न वी हैव कंक्लूडेड दैट इफ वी सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 17 यू विल गेट 10. सो दैट मीन्स इन रेस्ट ऑफ दीज थ्री, सो दिस द मिडल नंबर, तो जो उसके मिडल नंबर है द कॉमन नंबर फॉर द बोथ नंबर्स, जो इन दोनों का, इन दोनों नॉट मिडल नंबर एक्चुअली, द नंबर विच इज कनेक्टेड टू द बोथ नंबर, इन दोनों नंबर से रिलेटेड जो ये नंबर आएगा, जो ये आंसर आएगा, दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स. तो इन दोनों नंबर्स के डिफरेंस वी आर गोइंग टू राइट हेयर. सो डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स वी आर गोइंग टू राइट इट हेयर ओनली. Is it clear? So the difference of these two we are going to write it here only. Okay बच्चे? So 17 minus 7 is 10. Now here it is 25 and here is 9. 25 minus 9. 25 minus 9 will be 16. 25 minus 9 will be 16. चाहे तो करके देख लीजिए. 25 minus 9. Okay, so it will become 15. It will become 1. 15 minus 9, that will 6. Okay, 1 will be 1. So that is 16. कितना आ गया? 16. So 25 minus 9 will be 16 only. So that is the answer that I have written here. Here it is 16. Clear? Now 12 and 50. So here it is 50, here it is 12. So 50 minus 12. It is 50 minus 12. 50 minus 12. So 0 minus 2, it will be 10. ये कितना हो जाएगा? 4. 10 minus 2 is 8. 4 minus 1 is 3. So that is 38. So here we will write 38. So here we are going to write 38. So that means the difference between 50 and 12 will be 38. Difference between 50 and 12 will be 38. Clear? Next, here it is 27, here it is 19. So 27 में से कोई ऐसा digit minus करिए so that you will get 19. Okay? Subtract some digits from 27 so that you can get 19 और 27 को ऐसे डिजिट से माइनस करिए जिससे कि आपको आंसर 19 मिले. सो दोनों तरीके से कर सकते हैं. 20 माइनस 27 में से कोई ऐसा डिजिट माइनस कर सकते हैं, या 27 को किसी ऐसे डिजिट से माइनस कर सकते हैं. सो बोथ मेथड यू कैन अप्लाई. ओके, सो जस्ट आई विल जस्ट टेल यू द बोथ मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम 27 सो दैट योर आंसर विल बी 19. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 27 में से ऐसा एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है सो दैट योर आंसर इज 19. So उसके लिए हम क्या करेंगे? We are going to subtract 19. Okay, sorry. We are going to subtract 19 from. We are going to subtract 19 from 27. 27 minus 19. Okay, 7 will become 17. 2 will become 1. 17 minus 9. 17 minus 9. That will be 8. Okay, sorry. 17 minus 9, that will be 8. 1 minus 1 is 0. So that means अगर हम 27 में से 8 माइनस करेंगे you will get 19. तो देखिए क्या वो सही है? Is it correct? So 27 minus 8. It is 7. It will be 1. Okay. 17 minus 8 will be 9. 1 will be 30. Yes, it is 19. So 27 में से if you subtract 8, you will get 19. Okay. So if you subtract 8 from 27, you will get 19, and this is what we want here.
This is the answer that we are required in this question. Clear? So देखिए एक तो ये तरीका था. Okay, and these calculation बच्चे you have to do in the rough only. You will do these calculations in the rough. देखिए एक तो ओके 27 में से 19 को माइनस करके you will get 8. ठीक है, तो 20 मतलब 27 में से 8 माइनस किया तो आपके पास 19 आया. तो ये 8 निकालने के लिए आपने इन दोनों को माइनस कर दिया. और अदर मेथड इज आइदर यू कैन जस्ट ऐड देम एज वेल. तो 27 में 19 प्लस करिए, जस्ट ऐड 27 विद 19. 9 प्लस 7 दैट विल बी 16. 2 3 4 दैट इज 46. कितना आ गया? 46. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट 46 माइनस 27. कितना आया? इट विल बी 16. इट विल बी 3. 16 minus 7 9. 3 minus 2 is 1. That is also 19. तो चाहे तो आप इन दोनों को करके इन दोनों को माइनस करके भी आंसर निकाल सकते हैं इधर, और यू कैन आइदर जस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग देम और बाय एडिंग देम बोथ. तो 20 अगर आपके पास जो आंसर इज गिवन एंड वन नंबर इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द अदर नंबर. ओके, सो आप ओके तो यू कैन आप चाहे तो इन दोनों को ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं, और यू कैन आइदर कैलकुलेट द आंसर बाय सब्ट्रैक्टिंग देम एज वेल. ओके, सो बोथ मेथड यू कैन फॉलो. सो वट एवर यू फाइंड इजी यू कैन फॉलो दैट वन. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. ओके, सो यू कैन जस्ट पॉज योर वीडियोज हियर एंड नोट इट डाउन इन योर बॉक्स. क्लियर? चलिए, नाउ मूविंग नेक्स्ट टू द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. So let's move to the C part of the same question number 11. This is the C part. So here I can see a circle, big circle here. Okay, again a leaf is drawn like this. एक पत्ता बना हुआ है. Okay, so this is the kind of leaf you can So this kind of a leaf you can see in the C sum as well. So some of the digits that are written in it, I'll just write it here. That is 16, 9, 8, 10, 2, 72, 36, 40 and 21 and 19. Okay, so this is the sum that is given in your book. So this is the sum that is given in the C part of question number 11 of exercise 15.1. ठीक है, now we have to observe this C part of this question number 11 of exercise 15.1. So while first of all what we are going to observe, first of all हम वो देखेंगे जो already उसमें दिया हुआ है. So the given part we are going to observe first. So 4 petals are given. So first of all let's observe the pattern which is already completed. तो complete pattern हम सबसे पहले उसको observe करेंगे. So this is the complete one and this one is also completed. So सबसे पहले हम इसको observe करें. Okay, so 10 to 8. So if देखिए हम इसको commonly आप देख सकते हैं, if we subtract, अगर हम दोनों को 10 और 2 को add करेंगे you will get 12, but here it is 8. But if we subtract 2 from 10 you will get 8. So that means इसमें हम कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? 10 minus 2 is 8. Clear? Let's move to this one. So this is another pattern that is completed one in this C part. So here it is 40, 21 and 19. So 40 minus 21. 40 minus 21. Here it will be 10. It will be 3. 10 minus 1, 9. 3 minus 2, 1. That is 19. The answer is 19 here. Okay, so that means in these two patterns, after subtracting these two numbers, we get this one. So इन दो numbers को हम subtract करेंगे अगर आपस में, तो हमारे पास यहाँ वाला number आ जाएगा. इसमें भी if we subtract these two, you will get this one. So now the same pattern we are going to follow in the rest of the two patterns. तो हमारे पास ये दोनों दिए हुए हैं. ओके, एंड दीज आर द इनकम्प्लीट वन. अब ये दोनों हमारे इनकम्प्लीट हैं. ओके, सो लेट्स कंप्लीट देम बाय गिविंग द
by doing the solution. So here it is 36, here it is 72. So 72 देखिए दोनों ये दोनों इस दोनों पैटर्न में हमने क्या किया, in this we get the answer after the subtraction. So that means इसका आंसर भी हम कैसे मिलेगा हमें, after doing the subtraction only. So 72 minus 36. 72 minus 36. 2 is here, it will become 12. It is 6. 12 minus 6 is 6. 6 minus 3 is 3. So that is 36. So the answer कितना आ गया हमारे पास 36. So after subtracting 36 from 72, the answer you get will be 36 only. तो 36 72 में से 36 subtract करके हमारे पास आंसर भी कितना आया 36. That's what we have written here. Clear? Now let's complete this one as well. तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बी पार्ट में करवाया था, either by adding these two you can get this one, और either by subtracting these two you will get this one. चाहो तो 16 और 9 को प्लस करके आप यहाँ का आंसर निकाल लीजिए, चाहे 16 और 9 को माइनस करके आप यहाँ का आंसर निकाल लीजिए. सो दैट इज टोटली अप टू यू. सो वॉट एवर मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज दैट यू कैन. ओके, सो 16 minus 9. ओके 16 प्लस 9 लेते हैं. चलिए 16 plus 9 कितना आ गया, दैट इज 15 25. सो कितना आया 25. सो अगर हम यहाँ पे 25 लिखेंगे एंड नाउ वी विल, अब देखिए हमारा जो आंसर ये आया है क्या हमारा सही है कि नहीं, वो हम कैसे देखेंगे. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम 25. अब इस 25 में से हम 16 को माइनस करेंगे तभी हमारे पास ये आएगा ना. सो वी आर जस्ट रीचेकिंग इट, वी आर चेकिंग इट. सो 25 minus 16 is, here it is 15, here it is 1. 15 minus 6 is 9. 1 minus 1 is 0. So that is 9. So this is the answer that we require. That means our calculation is completely correct. तो हमारी calculation बिल्कुल सही है. Clear? So देखिए, so in all the parts of this question number 11, we have observed that the answers we get, that we will get only after subtracting. Okay, तो हमें आंसर्स कैसे मिलेंगे, सब्ट्रैक्शन के बाद या सब्ट्रैक्शन के बाद ही. Okay, so if for getting the answers of this part you have to subtract these two numbers. Okay, and suppose जैसे कि इसमें दिया हुआ था, like in this, if the upper question is upper number is missing, so for that you can either add them for getting this, or either you can just subtract them for getting this. So this is up to you, whatever method you want to use you can. Okay, so this is the C part of question number 11. Okay bacha, now let's move to the next question of the exercise 15.1. Okay, 15.1 का next question देखिए. Okay, so let's move to the, okay, question number 12 is also like a figure, so let's do that one as well. Okay, so let's move to the 12th question of exercise 15.1. Question number 12, A part. So the question देखिए, nothing is written on the top, so कोई question नहीं दिया है. So that means it's simple that while observing this pattern you have to complete the incompleted parts. Okay, तो जो already इसमें जो incompleted parts है उनको आपको complete करना है. So observe pattern को observe करते हुए. Clear? So let's find out. So as I can see, the pattern is little bit like this. Here it is, between it is a square. यहाँ बीच में एक square दिया है which is divided into 4 parts. Okay, so whenever you will draw any kind of diagram, just make sure that you will use the scale only. Okay, बिना scale के कोई भी काम नहीं करेगा. So now it is like this. Now it is like this, this and this. Now it is divided like this. ठीक है, उसके बाद फिर से ये I'm very bad in drawing beta, so kindly forgive me for that. Okay, so this one,
this, this, this. Okay, so this is drawn like something like this. तो इस तरह से कुछ बना हुआ है आपकी बुक में. ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया. Let me draw it again. देखिए ये straight line. Here it is a straight line. Then it is like this. Okay. So these are the two numbers. Sorry, this is a kind of a diagram that is given in your book in the A part of question number 12. Okay, so now some numbers are already written. Here it is 8 is written. Here it is 12. Now 6, 19, 4. Just a second. Okay, 4. Then it's 3, then again it's 3, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए. Again here it is 3, okay, then it's 6, it's 2 and 5. तो देखिए इस तरह से आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है. ओके, तो थोड़ा सा बड़ा बना के आपको क्लियर होगा. डज इट? Now I think now it is clear to you. Now you can easily see all the numbers. So देखिए यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, एक डायग्राम ड्रॉ किया है. Okay, so in between this is divided into 4 parts, that is 8, 12, 6 and 19. This one is incomplete, this one is also incomplete, but this and these two ones are the completed ones. तो ये दोनों complete हैं, ये दोनों incomplete हैं. So for getting the answers of these two, यहाँ क्या आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दीज टू पैटर्न एंड आफ्टर दैट वी कैन आंसर दीज टू ओनली. तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों को ऑब्जर्व करके कैसे क्या पैटर्न फॉलो किया है एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू आंसर दीज टू एज वेल. आई होप नाउ इट इज क्लियर. तो देखिए एज यू कैन सी, देखिए हर बॉक्स, एवरी बॉक्स इज रिलेटेड टू दिस. दिस 12 इज रिलेटेड टू दिस, दिस 19 is related to this, 6 is related to this, 8 is related to this. Okay, so now you have to observe. अब आपको observe करते हुए बताना है. First of all we are going to observe the completed ones. तो जो already complete हैं उनको सबसे पहले हम observe करेंगे. So let's 3 plus 3 is 6. तो देखिए 3 plus 3, आप देखिए मैंने सीधा प्लस से शुरू क्यों किया? बिकॉज मैथ्स में सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? एडिशन. ओके, अगर प्लस नहीं होता वी विल मूव टू सब्ट्रैक्शन. अगर वो भी नहीं होता तो वी कैन मूव टू द मल्टीप्लिकेशन एंड फिर दैट टू डिवीजन. सो एज यू कैन सी 3 plus 3, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है. 3 plus 3 is 6, 2 plus 6 is 8. सो दैट मीन्स अगर हम इन दोनों डिजिट्स को प्लस करेंगे यू विल गेट दिस आंसर. सो 6 plus 2 8, 3 plus 3 is 6. So that means if we add these two numbers you will get this one. इन दोनों नंबर्स को ऐड करके आपको ये आंसर मिलेगा. बट इन दिस नंबर इज मिसिंग. सो नीचे वाला नंबर जो है हमारा मिसिंग है, तो वो हम कैसे ढूंढेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट? सो देखिए फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, आप जो हमारा आंसर दिया है हम दोनों को, इन दोनों को ऐड करके ये आंसर आया ना. सो यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस. तो जो हमारा आंसर आया है उसमें से जो 1 डिजिट ऑलरेडी गिवन है दैट यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट. सो दैट मीन्स द आंसर इज 19. So let's subtract 4 from 19. Let's subtract 4 from 19. So 19 minus 4, 9 minus 4 is 5. It will be 1. So that is 15. So that means here we will write 15. इन दोनों को ऐड करके you will get 19. So if you subtract, इन दोनों को ऐड करके आपके पास 19 आएगा. So but here this one is missing. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? You are going to subtract the answer from the number. Okay, so the number from the answer that is given. So 19 minus 4 is 15. Same in this here. After adding these two, you will get 12. So if you subtract 12 from 5 from 12, you will get this one. So let's subtract 5 from the given answer, that is 12. 12 minus 5, that is 7, 0. So that is 7. So if we are going to add, अगर आप 7 और 5 को add करेंगे, if we add these two, 7 plus 5 is 12. Okay, so if the one number is missing, you can just, by doing the calculation, you can just find the other one easily. Clear? So 6 plus 2 is 8,
3 plus 3 is 6, 7 plus 5 is 12, 4 plus 15 is 19. Clear? Okay, so this is the solution of the A part of question number 12. Chaliye, now moving to the B part of question number 12. Let's move to the B part of question number 12. B part. Okay, so again the same kind of diagram is written. So here the square is made. Okay, so I'm just making the diagram. So you will also make it like this only. ठीक है, थोड़ी खुली खुली बनाना बेटा, थोड़ा चौड़ा चौड़ा बनाना, ताकि जो आपको जो नंबर्स हैं वो क्लियरली विजिबल हो व्हाट यू हैव रिटन. ओके, और इसको डोंट मेक इट वेरी क्लियरली. ओके, क्लियरली बनाएंगे देन यू विल बी एबल टू सी द ईच एंड एवरी नंबर ओनली. अगर थोड़ा ही zigzag को कर दिया तो यू विल नॉट बी एबल टू सी इवन अ सिंगल नंबर इन इट. सो लेट्स मेक अ मार्क अ लाइन बिटवीन दीज. Okay, so this kind of diagram you can see in the B part of question number 12. Okay, so now we are going to write the numbers. So, okay, this is divided into 4 parts. Let's divide it into the 4 parts. Here it is 6, then 9, 25, then it's 39, 12, 31, okay, 18, 12, 16, 7. So the B part is given like this. So this is the type. Okay. So देखिए, this is the form that is given in the B part of your book. Question number 12 जो हमारा उसका B part ऐसे दिया हुआ है. Okay. So let's see what is given and what is missing. So in this is the complete pattern. इसमें ये पूरा complete pattern दिया हुआ है आपके पास. Yes, it is a complete pattern that is given. 16, 7 and 9. This is also the complete one. 18, 12 and 6. This is incomplete. इसमें ये वाला number missing है. And here this is also incomplete. In this number is missing. So that means for that, first of all we have to observe the pattern that is already completed. जो ऑलरेडी कंप्लीटेड पैटर्न है हम उसको ऑब्जर्व करेंगे. तो देखिए 16, 7 एंड 9. तो देखिए हमने जिससे पहले ए पार्ट किया था, इन दैट वी हैव सीन दैट 16 हम सब्ट्रैक्ट ऐड करके हम इन दो नंबर्स को ऐड करके हमने ये आंसर आया था इन द प्रीवियस पार्ट. सो नाउ इफ वी ऐड 16 and 7, if we add 16 and 7 you will get 23, but here it is 9. So can we get 9 by these two numbers, by adding these two numbers? No. Okay, let's move to the then subtraction. 16 minus 7. Okay, so let's do 16 minus 7. 16, 0. 16 minus 7 will be 9. And here the answer is also 9. So that means we have got 9 by subtracting these two. तो बड़े में से छोटे को subtract करके we got 9. Here I am showing you this. इससे पहले वाले पार्ट में we have done the addition, but in this we have done the subtraction. So if we subtract 7 from 16, you will get 9. Now observe this one, 18 and 12. So अभी इसमें हमें subtract करके आंसर मिला था. अब देखिए 18 minus 12. So let's subtract 12 from 18. 8 minus 2, 6. 1 minus 1, 0. So the answer is 6. So here it is also 6. So these two patterns are completed. देखिए ये दोनों पैटर्न हमारे completed थे, इसलिए हमने इसको ऑब्जर्व किया. So after observing these two, we got that 16 minus 7 is 9, 18 minus 12 is 6. Okay, so that means अब जो हमारे मिसिंग नंबर्स हैं that we can get only after doing the subtraction. Okay, this number is the solution of इन दोनों को subtract करके ये आंसर आएगा. Clear? So now let's subtract 12 from 39. 39 minus 12. 9 minus 2 is 7. 3 minus 1 is 2. So that is 27. So that means if we subtract 12 from 39, you will get 27. This is the solution of this one. Clear?
अब यहाँ पे 31 है, यहाँ 25 है, हमें ये निकालना है. तो या तो इन दोनों को ऐड करके you will get this one, or by subtracting these two also you can get this one. Okay, so it is up to you. So whatever method you want to use, you can. So I will use the method of subtraction. So 31 minus 25. 31 minus 25. That will be 6. So that will be 6. Okay, कितना आया 6. So if we subtract 6 from 31, you will get 25. So if we subtract 6 from 31, you will get 25. Okay. So this is the solution of the B part of question number 12 of exercise 15.1. So you can just pause your videos here and note it down in your notebook. Clear? So with this, I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a good day.